Okay, so first of all, if we want the users will be able to work on Office 365, we will be needing a license, right? Without license, we can't do anything. Yes, sir. So to get the license, I think a deployment can be done without license also. So our agenda is to just see the deployment, how 365 can be customized and it can be deployed. Customized in the sense, so Office 365 is a full of package, right? It has Word, Outlook, Teams, everything it has, right? But Yes, sir. let's say we want to customize. We don't want to install Word. We don't want to install Excel. Just example, right? So we can make our own package also. We can make our own customized package also of Office 365. All right. So to deploy it, go to your portal, software library, and then you can see Office 365 client management Yes, expand. sir. There are other ways also. See, it is not mandatory that you are going to do it from here only, right? 365 can be deployed through group policies also. It can be deployed through your deployment, application deployment also. Like yesterday we did, you can make a MSI package and then we can install it, right? Yes, sir. But this is just a way that we should aware of that using this method also we can deploy the 365. Okay. Yes, sir. So if you will click on Office 365 management, first of all you can see Microsoft recommended installing WebView 2 console extension on all administrative consoles. Okay, so in order to install it, what you can do, go to administration and updates and servicing, and then you can see console extension, Console section. right? And then you can see WebView 2 runtime extension. So it is not installed, right click on it and Install. install it. Okay. So it will take a while to install. Updated extension and then close it. Yes, sir. And then you can run the console again. All right. And then go to software library, Office 365 management. Yes, now it is enabled, right? Yes, So sir. you can make an installer package, select Office 365 installer, Installer. name it. For example, I am installing Office 365, Office 365. So where do you want to install content location? Browse. We want to store it on the network path, right? Network part. Yep. So let's make a new folder here with the name Office 365.
right? So Yes, here sir. I want to store it. Then go next. Setting, go to customization tool. This is what I was telling that if you want, Mm, you can customize the tool. So select, go to the office, the customization tool, mm. and architecture 64-bit or 32. So we will go with 64. What 64. platform do you want to deploy? So Microsoft 365 apps for enterprise, 365 apps for enterprise, no teams, 365 apps for business, right? So it depends that what type of license you have. It totally depends that what type of license you have or you took for Office 365. So Yes, as sir. Office 365 is an online installation, I mean to say, online activation, right? Yes, sir. So you can just take a license, you can assign it to the user, and it would be automatically applied on the user account, and the users will start using your Office 365 applications, right? So for our case, we can go with Office 365 Enterprise. Okay, but in real time, you have to select the license, which type of license License. you have. Okay, Yes, sir. Visio. Do you want to deploy Visio? Microsoft Visio? If you have, then again, you will be needing the license for it. Mm. So I'm not going with it. Project, Microsoft project you want to deploy? No, I don't want. Additional products, language pack, Office 365 Access Runtime. So this would be the language pack. So additional products, you can select language pack, or this Yes, sir. also you can ignore, none. Um, Select the version. So this is the latest version, 19029201136. This is the latest version which was released in '07, means July, July right? 25th. Ah, This July. Yeah. correct. So you can select it, and then you can select that what and all packages you want to deploy. Sorry, what and all applications you want to install. Applications. Let's say I don't want Excel, I don't want to deploy Teams. I will show you Teams later on how it can be done. So I don't want to deploy OneNote. I don't want to deploy Publisher, right? I don't want to deploy Outlook new. So only these three applications, these three or four applications, I just need to deploy with my package. Got it? Yes, sir. Okay. Background, okay, Bing service would be the Microsoft search engine. That is fine. Language, already English United States, so it's not there. Anyways, let's select English United States. Hmm. Okay. And then additional languages, no. Additional proofing tools, no. Next, installation. Shutdown running application. Okay. So if you want during the installation, you want to shut down the running application, you can select it as yes, or if you don't want, then you can select it as no. That is your choice. Okay. Okay. Then next, if let's say tomorrow there would be any update, so do you want to uninstall? So this is what upgrade option. Uninstall any MSI version of Office, including project. Okay. If let's say there is already installed some of the devices, in some of the devices there is already Visio installed, project installed. So do you want to uninstall it? Yes, obviously. Why to keep it? Because we Yes, want sir. to deploy it using our own package, right? Yes, sir. So leave it. Automatically upgrade the selected architecture. No, no need to do anything. Just uncheck it. Okay. Yes, sir. Then next, automatically accept the license term. Yes. Yes. So mostly it is user based, right? So let's go with the user based. Then next, it is like product activation actually, right? So as Yes, soon sir. as you will assign the 365 license to the user, okay, let me show you an example, Ravi. Might be you will get confused on that. So I do have like for my Intunes, right? Yes, sir. What I did, I just purchased the Microsoft 365 for business.
Okay. right? In that business, already Office products are there. Let me show you. So Intune is a separately complete different that cloud, right? But Yes. See, Ravi, let me give you a like, very easy understanding on Intunes and SCCM. Okay? So in SCCM, right, you are configuring the environment in your own server and then you are managing your devices. yes, But in Intunes, you are just purchasing the license yes, sir. and then no need to configure it in your own servers. It is already configured on the Microsoft servers. You Microservers. have to just use the web API, that's it. Okay. And then you can control the devices of your organization. Mm. To give you idea on it, let me show you. This is Intune portal. This is Intune portal. Okay. And here I will be able to see my devices and all. So these would be the devices, Okay. right? And the applications that we deployed through SCCM. So through Intuos also we used to do the same thing. So these are the applications we deployed. Okay. Yes, sir. Got it. So everything is there. You have to just take the license and then you can start controlling. And then whosoever user you want to create, right? Or whosoever user is going to be the part of your organization, to them you have to assign the license. So business premium license include multiple applications. Like if I'll give you the example, see all these applications users will be able to use. I've got avatars for Teams, and then Azure Active Directory, Azure Information Protection Plan, Azure Right Management, Common Data Services, Common Data Service for Teams, Data Loss, Exchange Online Archiving, right? Yes, sir. Microsoft 365 application for business. So these are the applications, Yes, sir. Outlook, Word, and all. Okay, multi-factor and Defender for business, right? Entra Plan, ID P1, and then Microsoft Intune, Intune Plan 1. So multiple things you will be able to get, right? Yes, sir. सर जो Yeah, ऑफिस 365 में जो काम करते हैं तो यही मैनेज करता है, यही माने यही इंट्यून ही मैनेज करता एग्जैक्टली है। आप देखो 365 में क्या मैनेज करते हो, आप शेयर पॉइंट मैनेज करते हो, एक्सचेंज मैनेज करते हो, तो ये रहा एक्सचेंज शेयर सर। पॉइंट, ठीक अच्छा। है? ये रहा शेयर पॉइंट, इसमें सारा मैंने तभी बिजनेस प्रीमियम लिया हुआ है क्योंकि ऑल द लाइसेंसेस आर देयर, इसमें शेयर पॉइंट का लाइसेंस भी है. आई कैन क्रिएट माई शेयर पॉइंट एंड आई कैन पब्लिश माई साइट फॉर द यूजर्स एंड आई कैन गिव द एक्सेस. तो ये सारा आपका 365 में इंक्लूडेड है. इफ यू वांट टू लर्न, वी कैन हैव क्लासेस ऑफ 365 आल्सो. नहीं, नेक्स्ट मेरा टारगेट वही है सर, तो अभी फिलहाल। ओके, या, सो let me go back to the server. Huh. User based, right? Then go next. Provide your organization a name to the company property on office documents. Okay, so it was lab, na? Lab private limited. And then next, and that is fine. Just leave it as it is. Finish. Review. If you want to review all the things, you can review. And keep current settings. Whatever we have defined, we want to keep current settings. And then okay. And then submit. Okay. Now go next. Deployment. Do you want to deploy the application now? Yes. Next. Collection. Target the collection. So it is device-based collection, and we want to just deploy it on Windows 10 collection only. And then okay. Then next.
add distribution point, distribute it to the MECMPS. Okay. Then next. Now, do you want to install it in the required mode or you want to make it in the available? So Available we model. select available mode. Why to keep load on the machines? Okay. So inst available. Then next installed would be it will get forcefully installed into the devices. Okay. I mean to say required means it would It be will be already forcefully installed. Yes. installed. Yeah, yeah. So we will do it in the available mode. And now just wait for some time. So what it is doing on the back end, it is just creating the package and it is trying to save the package on the location that we have defined. Yes, sir. So if we'll go to the source underscore files, okay, let it save. Hmm. So yeah, it is trying to store the package and all, right? You can see the setup.exe file. Yes, sir. Okay, the Microsoft Office 365 client wizard is completed, right? You can close it. And let's go to the client devices. It is getting hanged here. Okay, what's the IP of our domain controller? I think 1004. 104. No, no. Sorry, 10.0.0.4, I believe. Yeah. Can you check it, please? One second. I will connect Windows 10 VM from there because it is very slow now. Okay, I Yes, think sir. I got it. Uh, I got it. 1005. Yes. I got it. Lab slash Ravi and then the password.
All right, so this Yes, sir. is my client machine. It is getting connected. Same way, let's connect the other one also. 1.5 is Database. running. No, no, no. Why to connect database? The client machine is running 1.5. Ah, it's running. Okay. Okay. So if we'll go to the software center, the 365 should be available. Or if not, we will run the policy. Okay. Go to Yes, the sir. settings. Sorry, go to control panel. Either you can wait for some time, or if you want to do it now itself, just go to configuration manager, actions, application deployment evaluation cycle, run now, and then machine policy retrieval and evaluation cycle, run now, and then okay, now close it. Hmm, let's check. Okay, software library, Office 365 deployment. It is in progress. Hmm. Let's wait for some time. 7zip 365 install Complince 0.0. Okay. Yeah, it is in progress state. Let's wait for some time. Okay, we got it, I believe. Yes. Yes, sir. Right. Opposite So side. if you Yes. want to install, you can select it and you can start installing it. Choice is yours. So do you want me to install it? No, it's fine. I can do the install. Yeah, you can Another. do the install. Okay. Now this 65 is done. Actually, I'm not feeling well today, Ravi. Thing is, Okay, okay. uh, What happened? Got fever? fever and then throat infection. So Okay, throat okay. is totally choked. Install Office 365, deploy script, compliance script. Okay.
We can deploy the scripts also using PowerShell, Yes, sir. right? You can deploy PowerShell script if, let's say, you want to create some folders, you want to create some files, you want to delete some data, right? So rather than doing this thing individually on the onto the device, you can Hmm. create a script, you can create a PowerShell script, and you can deploy it in your environment. It's very easy if you are, but the thing is that you should be aware of PowerShell in this case, PowerShell. right? So these are some basic commands that I have written, PowerShell commands that I have written. So let me show you with the help of these commands how we can deploy it in the Yes, sir. environment. So I'll copy these. Okay, what it will do, first of all, read it. Remove item C Path. Windows temporary recurse Mm-hmm. force. So under temporary, where whatever it will find, it is going to delete it. Like we used to delete temporary files, na? Now this command will do for us. Now again remove from distribution, software distribution, download, and then start. From download, remove everything, right? From prefetch files, remove everything. From CCM cache, remove everything. So this is what it is going to do, and it is going to save the space from the files which is occupied by these files inside these folders: temporary, download, and then prefetch, and then CCM cache. Yes, sir. Got it? So you can copy it and go to scripts, go to portal, and you can see uh, let me software library, and then you can see scripts, Yes, sir. right? Then right click on script and then select create script, right? Create script. Yes, sir. Create a script. Name it, script name. I am naming it as cleanup script because it is going to clean the data from the path that we are defining. Okay, so cleanup script, and then you can import the file here also, or you can paste your script like this also. Okay, Yes, sir. and then go next. Timeout monitors to execution status between. Okay, so script timeout, it should be deployed within 120. Okay, I'm just defining 120 seconds. Then next, next. Yeah, that's it. Acha, within the same script, if let's say you want to create something, okay, it is created. Yeah, okay, anyways, then close it. So this would be the script, right? Let's say in the same script, I want to define something else also. I want to create some folder. Okay. The okay. What it is going to do, it is going to create folder new item hyphen path C Windows temp. In the temporary file, it will create a folder with the name test1. In the software distribution slash download, it will create the folder with the name test2, and then test3, test4. Okay. Yes, So sir. I will copy this also. And in the same path, I will define it. Or if you want to create a separate script, that is also fine. Choice is yours, how you want to do. Okay. Yes. And then next.
and then close. Now you can see waiting for approval. So if you want to deploy the script, obviously you have to approve it. But as of now, we don't have the permission to approve it. So how to get the permission? Go to administration, go to sites, right click on it, and then you can see hierarchy settings. And then you can see script authors require additional script approver. So just uncheck it, apply and okay. Apply and okay. Okay. Now go back and try to refresh it. Right now you can approve it directly. And then next, approve, next, next, and then close it. Now this script is approved. Right? Now you Yes, have sir. to deploy it. Mm, okay. To deploy the script, we have to go to asset and compliance. Device collection. If you want to deploy in the device collection, that is fine. Select. So I want to deploy it for the all desktop and server clients. Okay. Or if you want Yes, to do sir. it for Windows 10, choice is yours. Wherever you want to do, choice select it. Choice is yours. Right. Select it, and then choose run script. And the script you will be able to see your cleanup script, right, which we have created. Yes, sir. Likewise, if you have created multiple ones, so it would be listed down here. You have to select that which script you want to run. Okay, then go next. I want to do it now itself. Next, next, and yeah, it's done. It is trying to run, right? You can see the details like here also. On database it is executed, MECM it is executed, DC client 1. Exit code 0, that means it is successfully done. Now let's verify whether it is done or not. So here only you can check whether you can see the data, C drive, Windows, what was the path? CCM cache में देख लेते हैं चलो. C does CCM cache. See, test3 folder is created, Yes, sir. right? And if you will check on other devices also, uh, see Windows, let's check in temp also. Test1 folder is there, right? Yes, sir. CCM cache test1 would be there. Test3, sorry. CCM cache में बनाया ना? CCM cache test3 folder would be there. Got it? Yes, sir. So this is how you can create a script and then you can run it. I just created a simple script only, but it totally depends on your knowledge on PowerShell. Then the process would be the same which I have followed. So you have to write down your script, you have to approve Sir, it, and then you have to deploy script it. लिखना ही तो that is the Big oh, deal. big deal. Yeah, because in that PowerShell is must, right? Or it totally depends on your requirement also. You can get the script from Google also. No need to worry Hmm. about. Okay, because for this you have to learn PowerShell.
Got my point? Yes, sir. We should be aware of the process in case of SCCM. REST, yes, you can get the script from the Google also, from ChatGPT also you can get it. So Yes, sir. choice is yours how you want it. Then you have compliance settings. Compliance. What is compliance? कंप्लायंस जो हम लोग मेंटेन करते हैं कंपनी में सर, जो अन अन कुछ ब्रीच ना हो, कंप्लायंस। Compliance is basically in case of SCCM, right? Compliance is basically to identify whether the device is compliant or not. ओके, यस सर। Now, compliant is based on the baseline. हम कोई रेफरेंस तो देंगे ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई अगर किसी ड्राइव में, सॉरी किसी लैपटॉप में सी ड्राइव के स्पेस 80 GB से ज्यादा खाली या 80 GB तक खाली नहीं है, या फ्री स्पेस 80 GB अवेलेबल नहीं है, then in that case the device is going to be non compliant. ओके सर। ऐसे ही अगर किसी डिवाइस में गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड नहीं है, so that device is going to be non नॉन कंप्लायंस। compliant. Like that I have to create the baseline first of all. जब तक मैं criteria define नहीं करूंगा, right, how I can get the condition true or false, है ना? यस क्राइटेरिया सर। डिफाइन करूंगा मैं और वहां पे वो बताएगा कि हाँ उस केस में कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होगा तो वो उसको नॉन कंप्लाइंट बना देगा, फॉल्स होगा तो वो उसको कंप्लाइंट बना देगा। ठीक है? यस या सर। वाइस वर्सा बेसिकली। जो भी हम डिपेंड करता है वो हमारी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम कंडीशन क्या डिफाइन कर रहे हैं, राइट? यस सो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द बेस लाइन कि भाई हम किस बेस लाइन पे लगाना चाहते हैं। ठीक है? सो यस सर। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू check the whether the Firefox is installed onto the devices and Firefox has the latest version or not, then in that case I will define the compliance settings. I will create the baseline first of all. So go to the portal and then go to asset and compliance, and then you can see compliance settings, and then you can see configuration item and configuration baseline. So basically you have to play around with these two options for the compliance settings. ठीक है? यस So सर। go to configuration items, right click on it, and then create configuration item. Name it whatever you want. यस सर। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कौन कौन सी एप्लीकेशंस डिप्लॉय कराई हैं? ज्यादा कुछ डिप्लॉय नहीं किया ना हमने, इंस्टॉल किया आपने? इसमें ये एमएसआई एप्लीकेशन सर, अभी ऑफिस 365। यस, वीएलसी और जूम। ओके लेट्स डिप्लॉय। हमने क्रोम भी नहीं डिप्लॉय किया, वेरी गुड। चलो एक बार फायरफॉक्स डिप्लॉय कर लेता हूँ मैं, ठीक है? सो दैट मैं आपको कंडीशन एक बार दिखा सकूं। सो लेट मी कैंसल इट एंड लेट्स गो टू सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, एप्लीकेशंस, राइट क्लिक। वैसे हम 7-zip पे भी लगा सकते हैं, ओके लीव इट। सो लेट्स गो टू द एसेट एंड कंप्लायंस कॉन्फ़िगरेशन आइटम, राइट क्लिक क्रिएट कॉन्फ़िगरेशन आइटम। तो कुछ डिवाइसेस के अंदर ना 7-zip इंस्टॉल कर लो पहले, क्योंकि जब तक इंस्टॉल ही नहीं होगा तो वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा, राइट? 7-zip पे लगाते हैं। यस सर। तरीका बताया तो, रेस्ट यू कैन ट्राई बाय योर ओन, ठीक है? श्योर सर। एक इस डिवाइस में हो गया, एक 1.5 में भी कर लो। ये लो यहाँ पे भी आ गया ऑफिस।
Mm. Okay, right. Now let's minimize it and go back to the SCCM server. So let's say the name I'm giving it as 7-zip CI. 7-zip CI means configuration item, okay? Yes, sir. CI. So I just want to test it on Windows 10 or later. I don't want to do it for the servers. Okay? So I will select Windows 10 or later. Then next, Windows 10, all Windows 10, 32-bit, 64-bit. For now we have 32-bit only. So why to check? Sorry, 64-bit only. So why to check on 32? Let it unchecked or let it be. No problem. Next. So device setting groups, password device, cloud roaming. I think this is not needed. Yeah, let's go next directly. No need to do anything. No, not needed. And platform applicability, leave it next. Are we doing the correct one? Okay, just me cancel it. Just give me a moment. ऐसा तो नहीं देता था पहले. ऑप्शन नहीं दे रहा. Okay, let me go with 7-zip CI. Then next. Next. Yeah, now it is fine. Okay, Ravi, we need to go Yes, with the Windows Desktop and Server Customs. Custom option. yes, Okay. yes, sir. Then next. Okay. Then next, new name, whatever you want to name it. For example, I'm naming it as setting. And in the setting, type file system. And then type would be file. Okay, fine. Now path, browse my computer, C drive. Now we have to give the location that where actually 7-zip is installed. But 7-zip is not there in this server, right? Yes, sir. So I will install here also. Software center. Oh, we deployed Firefox here only. Okay. Then I need to cancel it. Let me deploy 7-zip here because we have to define the path. Okay. That where the 7-zip got installed. Okay. Like in case of Firefox, you have to browse my computer, C drive. It would be there under uh, program files x86. Mozilla Firefox है यहाँ पे. No, it's not there. Then go to program files. अच्छा install नहीं किया ना? That is why it is not showing. Okay. So either you can install Mozilla or you can do it 7-zip, but 7-zip we have in all the devices like Windows 10 also. So I'm Mm. installing 7-zip here also. Okay. Yes, sir. Let me cancel everything and let's target Windows Server also. Software library, 7-zip, deploy and deploy it on collection. Collection would be device collection and server 2019 collection.
Okay, then next, then next. अवेलेबल मोड में कर लेते हैं. Next, 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 next. Close it. Okay. And after some time, 7-zip should be visible here. Or even if we have already created the Firefox, right? Let's deploy this Firefox also to the other devices. Deploy, no, distribute content. It is already done. Distribute content is already done, na? Oh, let me check. It is already done. Distribution is already done. Just deploy it. Next, What is collection, device collection, Windows 10 collection. Next, next. Okay, let's make it in the required mode so that manually we need not to do anything. And then close it. Wait for 2 or 3 minutes. Or if let's say you don't want to wait, then you have to. Okay, 7-zip is installed. Control panel. Actions. Run now. And then okay. After some time, we will be able to see Firefox also. Okay, you can see software change. You got the message. Downloading and installing software. installing software? Okay, yeah. Firefox is there. Okay, right? We got the Firefox. Yes, sir. Then close it. So on that other device also we will get the same. And then let me go back to my SCCM server and then I'll close it. And let's create the configuration item for Firefox only. Software library. Firefox is installed in this device or not? It's not there, na? Let's install here also. Because for Windows 10 we deployed in the required mode, right? And for the server it was already deployed in the available mode.
So that is why we are doing manually installation in case of server. Mm. So for now you can see Ravi, so it's 139.01 version, right? Yes, sir. But I will intentionally make this device as non-compliant. ठीक है, मैं क्या डिफाइन करूंगा, मैं अपनी सेटिंग में फेल्ड क्यों दिखा रहा है भाई, वो तो गया स्टेटस इंस्टॉल्ड, ठीक है, लेट इट रिपोर्ट. Okay, anyways, we can ignore it. Yeah, so I will intentionally make the devices as non-compliant. क्यों? मैं वहां पे डिफाइन कर दूंगा कि डिवाइस के अंदर अगर 140.0.1 वर्जन इंस्टॉल्ड है, then only the device is going to be compliant, Compliant, else it would be non-compliant. non-compliant. ठीक है? So go to the software center. Oh, sorry, go to the console, and then you have to make the name. This is what of 365 client. Close it. Close this one also. Huh. Now go to asset and compliance configuration item, Firefox CI, next, and Windows 10 is fine, next, and then setting new. So new, I will name it as setting only, and the setting type I will select file system, Yes, sir. and then I browse the path, क्योंकि उसको डिटेक्ट भी तो करना है कि वो इंस्टॉल्ड है भी या नहीं. तो Yes, sir. सी ड्राइव में मैं डिफाइन कर दूंगा, प्रोग्राम फाइल्स में दिख रहा है मोजिला फायरफॉक्स, हियर इट इज, राइट. Yes, sir. सो इसको एक्सटेंड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा. एनीवेज मोजिला फायरफॉक्स, तो मैंने फॉर एग्जांपल ये पूरा फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, Yes, एंड sir. देन ओके. बट बेसिकली आई वांट टू चेक द फाइल, ठीक है, कि वर्जन के लिए क्या होता है. वर्जन के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, फायरफॉक्स डॉट ई एक्स फाइल पे, एंड let me type f, and it will take me to there. So this file is the main file that we need to verify. So we will check this file in the version of this file, okay. Yes, sir. So check on, select the rule that defines compliance for the selected file, or sorry, the selected file must be compliant with the following rule. Following I rules. will add, so instead of date modified, I will select file version, and I will, as I mentioned, I'm going to make intentionally this device as non-compliant. तो मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई अगर 140 वर्जन है इंस्टॉल्ड, then only it is going to be compliant, else it is going to be non-compliant. और या इक्वल टू दे सकते हो या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू दे सकते हो, चॉइस इज योर्स. तो क्या मतलब हुआ कि अगर कोई डिवाइस के अंदर मोजिला फायरफॉक्स का 140.0.1 वर्जन इंस्टॉल्ड है या फिर उससे ऊपर वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है, देन ओनली द डिवाइस इज गोइंग टू बी कंप्लायंट, और एल्स इट Yeah. वुड बी नॉन कंप्लायंट. Yes, sir. तो हमारे केस में तो डिवाइसेस नॉन कंप्लायंट ही आने चाहिए, है ना. Yes, sir. देन ओके, ठीक है, एंड देन ओके, देन नेक्स्ट, और अप्लाई, ओके, डन, नेक्स्ट, नेक्स्ट, एंड देन नेक्स्ट, क्लोज इट.
एक सेकेंड यहाँ पे। ओके, क्लोज करते हैं। फायरफॉक्स exe must not exist, ये क्यों दे रही है? फायरफॉक्स CI, हाँ, फाइल exist the following number of times and then okay. Did we made something wrong? .exe, अरे एक गलती कर दी यार। जब हम वो कर रहे थे ना, सपोर्टेड प्लेटफॉर्म इज फाइन, सेटिंग एक बार एडिट करके मेरे से गलती से यहाँ पे चेक हो गया। Okay, I'm removing it. Let's create it again, Ravi. Okay. Okay. That is why I think I have checked on must not exist. That is all because it is not showing the correct one, which I was looking for. Create uh, Firefox CI. Next, next, new. I will select file system here, and then the name, setting, and browse path, C drive, program files, Mozilla Firefox, and in Mozilla I will select Firefox exe। देखो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया था, ये चेक हो गया मुझसे। ठीक Yes, है, sir. द सिलेक्टेड फाइल मस्ट एग्जिस्ट ऑन क्लाइंट डिवाइसेस, ये होना चाहिए था। ठीक है, Okay. सो इट वाज माय बैड। देन ऐड and define the rule, uh, file version greater than or equal to, but I will make it as intentionally non-compliant 140. Okay, okay, apply, okay. Yes, now it is fine. Go next. Yes, now it is fine. Must exist, right? Yes, sir. Yes, sir. Next, next, and then close it. Now we want to evaluate, right? So to evaluate again, what you can do? Must devices Windows 10. Okay, yes, just wait for it. Now we have to create the configuration baseline. Right click on it, create configuration baseline, name Firefox baseline, and then add what configuration item. We have already Configuration added item. the created the configuration item, Yes. Firefox CI, and then add, and then okay, and then okay. Right now here it will show you whether how many devices are compliant and how many devices are non-compliant, but we have not deployed it for the evaluation. So right click on it, Mm-hmm. and then you can select deploy, and then collection, all the machines. Let's do it in device collection, all devices and computers. Okay, okay, and that's it. Now you can wait for some time, or go to control panel,
अच्छा, यू कैन डू वन मोर थिंग। कहाँ मिलता है यहाँ पे कंपोनेंट्स कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो फायरफॉक्स रन हो गया, आ गया बेस यस सर। लाइन। यस एंड सर। देन यू कैन सेलेक्ट इवैल्यूएट। नाउ इट विल शो यू वेदर, अच्छा देखो स्टेटस देखो क्या आया है। नॉन कंप्लायंट। क्योंकि वर्जन तो 139 है ना। यस सर। अभी थोड़ी देर में आपको यहाँ पे भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये तो मैं आपको मैन्युअली दिखा रहा हूँ डिवाइस पे, बट थोड़ी देर में आपको इधर भी दिखना शुरू हो जाएगा वेदर it has whether it is compliant or it is non-compliant, or whether how many devices are compliant and how many devices are non-compliant। ठीक है। यस। तो ये तरीका हुआ टू चेक बेस्ड ऑन द फाइल सिस्टम। यू कैन चेक बेस्ड ऑन द रजिस्ट्री वैल्यू ऑल्सो। You can create the compliance settings based on the registry value also. So I'll show you that. Create configuration item, name। क्या चेक करें, डिफेंडर का चेक कर लेते हैं whether defender is on the latest version or not, right? So if it is the latest version, then it is going to be compliant, if not then non compliant। मतलब कुछ भी कंडीशन आप लगा सकते हैं यहाँ पे। यस सर। ठीक है। So I will name it as registry CA, then next new। So I will give a registry value। अच्छा, you can see, you can define these things: active directory query, assembly, file system, IIS metabase, registry key। So you can see all WQL query, SQL query. Based on these all things, you can create the compliance settings। Okay. So I am going with registry key और value, किसके साथ जाए? की के साथ चलते हैं, चलो एक बार। हाँ, HKL हमारा ना, ठीक है। की नेम सेटिंग। Okay. यस सर। Now the key value I will browse। और एक काम करते हैं, की छोड़ो, वैल्यू जो जानते हैं, रजिस्ट्री वैल्यू, या सो ब्राउज, expand software, expand Microsoft, and then नहीं, इधर नहीं दिखा रहा यार ये। ब्राउज सॉफ्टवेयर, देखो मोजिला यहाँ से भी चाहते तो यहाँ से भी चेक कर सकते थे वर्जन। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एंड देन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। You can choose anything of your choice. Okay, it is not mandatory that always you have to go with the things that I am selecting. This is just for your idea that what you need to do। Okay। यस सर। डिफेंडर दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा ना? नहीं दिख रहा सर। विंडोज डिफेंडर डब्ल्यू पे जाए, PKRSTUVW। हाँ, विंडोज डिफेंडर है ना, ये रहा। It is not Microsoft Defender, it is Windows Defender। Okay, विंडोज डिफरेंट। expand it, and then you will be able to get signature update। ठीक है। So inside signature update, if you will go to, our requirement is basically every machine should have the latest version of Windows Defender। ठीक है। So if this registry key is present, then only the device is going to be compliant, otherwise the device would be non-compliant। Okay। यस So सर। click on the third one, that is signature version, right? And below there is a checkbox, this registry value
must satisfy the following rule if present. मतलब डिफेंडर का अगर 1.433.252.0 वर्जन है, then only the device would be compliant, else it would be नॉन non-compliant. कंप्लाइंट। ठीक है, and then okay, that's it. ठीक है, यस सर। then apply. Okay, next, next, close it. Done. Now let's create the baseline. Right click, create configuration baseline, defender baseline. Add your configuration item which we have already created. This is registry CI. Add. Okay. Okay. Now deploy it. Collection. Device collection. All desktop and server clients. Okay. क्योंकि देखो क्लाइंट के पास भी डिफेंडर होता है और सर्वर के पास भी डिफेंडर होता है, ठीक है, यस सर। एंड देन ओके, एंड वी डिप्लॉयड दिस आल्सो. डिप्लॉय नहीं हुआ ये, इट इज शोइंग एज नो. Okay, now it is yes. Now, as I shown you, right? So either you can get the report from the control panel and you can get the device whether the compliant is non-compliant. Acha, in this case, let's check, guys. Let's check what it is. Uh, First of all, let's run the machine policy retrieval. Run now. Okay, then go to the configuration, refresh. Okay, we got the defender baseline also, right? And यस if सर। you want to evaluate, you can select evaluate. So in this case, see, it is compliant, यस सर। right? डिपेंडर Why कंप्लाइंट। compliant? Because it has the same version सेम available, वर्जन। right? यस सर। But let it evaluate on the other devices also, and then it will show you whether it is compliant or non-compliant. Any doubt? नॉट सो फार एक्चुअली। मेरे को मैंने आज 4 मशीन क्रिएट किया है सर, तो उसमें मेरे को पूरा से स्टार्ट करना है। Okay, you are configuring it in your laptop. लैपटॉप, हाँ, VMware Okay, में मैंने डीसी प्राइमरी क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 किया है, तो मैं okay, उसमें करूंगा पूरा। तो जरा बैठ okay, के आज। okay, okay. So what's the time? It's 9:35. 9:35। और कर ले? यस सर। चलो. Okay, so now let's talk about compliance setting is done. Now let's talk about operating system deployment. OSD सर मेरे को थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, तो सर हाँ, ओएस डोंट वरी. ओएसडी आज के लिए सिर्फ अपग्रेड कर लेते हैं विंडोज 10 को विंडोज 11 में, बस दैट्स इट. ठीक है, उसके लिए फिर आपका बूट इमेज व फाइल्स वगैरह भी डाउनलोड करना पड़ेगा सर। सब है अपने पास, क्यों दिक्कत ले ओके। रहे हो? 2 मिनट लगेंगे डाउनलोड करने में. ठीक है, यस सर। लेट्स डू इट. ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट, ओएसडी, the major part of SCCM that can be done in the organization. So with the help of OSD, with the help of SCCM, right, you can re-image the devices. Now, what is re-image, Ravi? इमेज लाइक नेटवर्क बूट, जो हम लोग ओएस को बूट करते हैं। मैंने आप
नहीं इमेज नहीं, री इमेज मीन्स कि उसके अंदर दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना, फॉर्मेट डाल। करके दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना इज कॉल्ड री इमेज। यस सर। जैसे कई बार कंपनी बोलते हैं ना यार लैपटॉप री इमेज कर दो, हाँ सर, जो तो हम उसका लोग का मतलब कंपनी में होता है सर, जैसे कि कोई लैपटॉप जो है कभी कोई यूजर बूट छोड़ नहीं के चला गया। बूट नहीं हो रहा है, या फिर हाँ तो उसको हम लोग रीइमेज मारते हैं नेटवर्क बूट के थ्रू। एग्जैक्टली, पीएक्सी बूट के थ्रू मारते पिक्सी हैं। बोट पीएक्सी एग्जैक्टली। बूट, हाँ। या फिर कोई मान लो लैपटॉप, मान लो ये लैपटॉप मुझे आज असाइन था बट मैंने कंपनी छोड़ दी, राइट? तो ये लैपटॉप मैं किसी और को असाइन करूंगा, ये लैपटॉप मेरी आईटी टीम किसी और को असाइन कर देगी। बट बिफोर असाइनिंग दिस लैपटॉप दे हैव टू री इमेज इट। उनको ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इंस्टॉल, फ्रेश से इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, क्योंकि यस मेरी सर। फाइल्स पड़ी होंगी, मेरी फाइल्स पे थोड़ा ना वो नया यूजर काम करेगा। यस सर। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड री इमेज। अब यहाँ पे दो तरीके से इंस्टॉलेशन होता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना लैब बना लो VMware वाला, सो दैट मैं हम्म। नेक्स्ट लैब में आपको बेयर मेटल इंस्टॉलेशन दिखा सकूं, क्योंकि एज्योर में बेयर मेटल इंस्टॉलेशन पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको यस सर। स्टार्टिंग में भी बोला था, यस सर, वो तो है ना? है, ऑलरेडी बना लिया मैंने लैब। राइट। तो मैं आपको वहां पर दिखा सकता हूँ बेयर मेटल इंस्टॉलेशन। यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करके दिखा सकता हूँ आपको। जैसे विंडोज 10 से विंडोज 11 में कैसे अपग्रेड सर, वही होगा। एग्जैक्टली, विदाउट हैविंग द सिस्टम इन फ्रंट ऑफ यू। यस सर। यूजर अपने आप इंस्टॉल कर लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने एंड से। आपको बस डिप्लॉय करवाना है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, यस सर। तो सबसे पहले मैं अपने कंसोल पे विंडोज 11 का ISO डाउनलोड कर लेता हूँ। विंडोज 11 इवेल्युएशन। क्या मिस किया मैंने? और एक जगह है सर। और कर रह गया यार, बस और कहाँ और है? एक बार, एक कोना में है सर, राइट कॉर्नर ये में, वाला, नहीं नीचे में सर, रेड कलर का जो है। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करिए सर। उसके बाद फायर हाइड्रेटर, सर मेरे और तो दिख नहीं रहा यार। सर अबे, हमको मेरे को हाँ वही होगा सर। अब एक और एक मिनट छूट रहा है सर आगे। ओके, फाइनली। So just put down anything here. विंडोज 10 का आईएसओ है मेरे कंप्यूटर में। 11 चाहिए ब्रो। अच्छा, 11 भी है मेरे पास। कहाँ रखा हुआ है? मेरा लोकल कंप्यूटर में है। हाँ तो कोई बात नहीं, अ, हमें तो यहाँ चाहिए ना SCCM हाँ। कंसोल पे, तो 2 मिनट हाँ, लगेंगे, इंटरनेट अच्छा चलता है ठीक है। Azure पे। ठीक है।
डाउनलोड नाउ। 64 बिट एडिशन। 3 मिनट बोल रहा है। तो हमें दो फाइल चाहिए होती हैं इन केस यू वांट टू डिप्लॉय एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। वन इज boot.vim boot dot and the win another yes one is win install.vim। install dot win yes install.vim में सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा डिफाइंड होता है। boot.vim फाइल बस फर्स्ट पहली बार लैपटॉप को बूट कराने के लिए यूज होती है। yes sir ठीक है। तो boot.vim फाइल बाय डिफॉल्ट आपको आपके एससीसीएम कंसोल पे मिलेगी, क्योंकि जितने अब नए वर्जन आ रहे हैं हाँ सर एससीसीएम के 2403 से बाद के जितने भी वर्जन है वहां पे आपको boot.vim इमेज बाय डिफॉल्ट मिलती है। install.vim आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। ठीक है। सर ये हम पहले ये तो हम लोग इससे भी कर सकते हैं ना सर ये WDS से भी हम लोग बूट बट कर सकते यहाँ पे ना और डब्ल्यू में आप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आप पैकेज इंस्टॉल नहीं कर सकते थे। हैं अच्छा हाँ सर यहाँ पे आप पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो। ये एडवांस्ड प्रोसेस है एज कंपेयर टू डब्ल्यू। ठीक है। अब इवन इंटेल में तो ऑटो पायलट आ गया, वो और हम्म एडवांस्ड है। ठीक है ना। यस सर डब्ल्यू बहुत पुराना तरीका है, बट प्रोसेस हाँ है उसमें भी तो बैकएंड पे बूट ये डॉट डब्ल्यू और ही विन यूज डॉट दोनों करेगी। फाइल ही यूज होता है ना सर करेक्ट करेक्ट। बैकएंड पे एससीसीएम भी डब्ल्यू ही यूज करेगा। हम्म ठीक है। so let it download meanwhile, let's go to our console। ये थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, ठीक है, मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है सर अभी नहीं दिखा रहा है। ओके। गो टू सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी एंड देन यू कैन सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड देखो बूट इमेज। यस सर 64 बिट इमेज आपके पास ऑलरेडी पड़ी है। ठीक है। 64 बिट। यस सर राइट। तो इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करो, राइट क्लिक, डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट, नेक्स्ट, ऐड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड देन क्लोज। ओके, इन प्रोग्रेस। एंड here you have to add your OS image, install.vim file basically। ठीक है। यस सर So hopefully it is downloaded। हाँ। Okay, and now let's mount it। hmm Close it and then right click on it, add operating system image, browse। अच्छा, we have to keep it in the network path, do remember this thing, okay? यस यस सर So let me mount it and let me, okay, so where we will be able to get it, sources तो and then install.vim file, I install.vim file, right? यस सर Copy it and go to your C drive, source underscore files, operating system, and I'm going to create one folder called win-11 and I'm going to keep it here। ठीक है।
तो हम लोग इसमें सर ये टास्क सीक्वेंस वगैरह क्रिएट कर देना सर। एग्जैक्टली exactly. अभी बता रहा हूँ बस। थोड़ा आइडिया है बिकॉज हम लोग करते हैं वो कभी हाँ तो पता नहीं है बैकग्राउंड में कैसे काम करता है वही पता नहीं है। तो नहीं, सेलेक्ट अभी करके आपको जो क्वेश्चन हो पूछ लेना, जैसे आपको कंफ्यूजन हो वही पूछ लेना, ठीक है। एक्चुअली आज बैक टू बैक क्लासेस हैं, इसके बाद एमसीएस से है। एमसीएस से 11 o'clock, हाँ। कितना क्लास लेते हैं सर मैंने वीकेंड में यार भी मेरा इतना पैशन है टीचिंग। वो तो आप मैं बताए थे। मतलब, हाँ मतलब मैं नहीं रह सकता इसके बिना, मेरे को ऐसा फील होता है। ओके, सो इंस्टॉल डॉट विम एंड देन क्लोज इट एंड देन ब्राउज एंड देन that network path, okay, and then go to operating system and then Windows 11 and then install.vim file and then open. Likewise, whatever kind of operating system you want to deploy, you can select it, you can upload it. Then next. So it auto selected, you can see Windows 11 Enterprise Evaluation, right? यस सर। Now this by checking box, select it. Then next, language, English, right? 64-bit architecture, x64. Then go next. Name it. If you want to rename it, that is fine. If you don't, choice is yours. Let it be as it is. Next, next, and then close it. Right? Now distribute it to the distribution point. Close it. So meanwhile, this it is getting distributed. Let's create the task sequence. Now, what is task sequence? Task sequence is basically step-by-step installation of your operating system. Let's say your laptop needs some drivers, right? यस सर। Let's say you want to restart the system first of all before starting the installation. Let's say you want to deploy some application during the deployment. So everything can be defined in the task sequence. That is, wherever you have any confusion, just ask straight away, because as you mentioned, you need to get a deep dive into it. Okay. यस सर। Then to create the task sequence, I will right click on it and then I will select create task सीक्वेंस। sequence. मैं यूएसबी पे भी बना सकता हूँ इसको, यूएसबी यस सर। बूटेबल मीडिया ही बना सकता हूँ। उसके लिए मुझे चूज करना पड़ेगा टास्क सीक्वेंस मीडिया, टास्क मीडिया। ठीक है। अभी के लिए क्रिएट टास्क सीक्वेंस। नाउ, अच्छा बिफोर दैट एक चीज और कर लो पहले। पहले परमिशंस भी होनी चाहिए ना डिप्लॉय करने की। सो ऐड डोमेन एडमिन अकाउंट करना है हमें। देखो अगर आप इधर जाओगे ना, इधर मैंने सब कुछ नोट किया हुआ है। अगर कहीं आपको लगे, देखो, अपलोड यस सर। इंस्टॉल डॉट विम डॉट फाइल, डिस्ट्रीब्यूट यस सर। इंस्टॉल डॉट विम फाइल डीपी, ऐड डोमेन एडमिन ऐड अकाउंट इन द डोमेन अकाउंट। नेटवर्क एक्सेस अकाउंट सेक्शन, ओके। then we will create the task sequence. टास्क सीक्वेंस। ओके। Because in order to deploy the operating system, we will be needing the high privileged account. इसका मतलब है Yeah, कि जो डोमेन अकाउंट में परमिशन एक्सेस दिया जाता है वही कर सकता है ना सर ये। exactly. Or who will be having the enterprise level access of domain. ओके तो मैं अभी के लिए ये रवि is the highly एक, privileged एक administrator, तो right? एक टीम में कुछ ही बंदे लोगों को कर सकते हैं ना चीजें Exactly, परफॉर्मेंस है। exactly, exactly. ठीक है। So go to server administration, right click on this primary site,
then choose what, configure site component, and then select distribution, software distribution, and then here you can see network access account, and then select user, specify the account that Okay, sir. access network location, and then add new account, Mm, browse, or you can choose existing also, Ravi, and then okay. Okay, yes, apply sir. and okay. That's it. This thing you have to do. Likewise, if let's say you want to give the access to others also, then right click, configure site component, software distribution, network access account. You need to add any other account also, like I think Jerry we created. Jerry, Jerry have cared. browse. Yeah, you can add like this also, other accounts like this also. Okay, Yes, sir. cancel. Now let's create the task sequence. Go to the software library, right click on it, hang on, create task sequence. Install an existing image package, build and capture the reference. You can create the reference image also. Do you Mm. know what is reference image? Revenue आइडिया नहीं है सर. ओके, लेट्स से एक लैपटॉप, मैंने एक रेफरेंस इमेज के लिए एक लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया विंडोज 11, यस और सर. उसमें कुछ मेरी कंपनी के सॉफ्टवेयर डाल दिए जो मैंडेटरी हैं हर एक डिवाइस के अंदर। यस सर. फिर मैं क्या करूंगा, उस स्टेट को कैप्चर कर लूंगा, यस सर. सो दैट जब भी मैं उस कैप्चर इमेज से डिप्लॉय करूं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑटोमेटिकली वो सारे सॉफ्टवेयर्स नए लैपटॉप्स में जाके इंस्टॉल हो जाए। ये क्लोनिंग वाला है क्या सर? क्लोनिंग, काइंड ऑफ क्लोन यू कैन से। ठीक है, यस सर. दिस इज कैप्चर द रेफरेंस इमेज। ठीक है, so we यस सर. will we will go with the install an existing image package, then next. So task sequence, I am naming it as win 11, 11. and in the bracket I'm typing format and re-image. Select the boot image, browse, we already distributed it, select 64-bit and then okay. Do remember you need now to select ARM 64, okay? This is for Azure Resource Manager. So you have to just go with the 64-bit and then okay. Then next. Now install package, browse, here we have, and then okay. Now partition and format the target computer before installing the operating system. क्या करेगा, पूरे सिस्टम को फॉर्मेट कर देगा और एक ही पार्टीशन बना देगा, सी ड्राइव। ठीक है, so this thing we have to select. Configure task sequence for use with BitLocker. So generally we are going to use this option when we are going to have a physical laptop. ठीक है, so for now यस we सर. are running virtual machine. It doesn't matter, we can uncheck on it or let it be checked also. Choice is yours. ठीक है, it doesn't matter at all. So product key is the operating system. बट आज के टाइम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस की कहां पर होती है, मदरबोर्ड के साथ बंड होती है, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर लेगा मदरबोर्ड। ठीक है, जैसे जो ओईएम जो ऑटोमेटिकली. करेक्ट 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 करेक्ट, ओईएम ऑटोमेटिकली आपको एक्टिवेट करके देता है, और वो होता है. मदरबोर्ड से जैसे इंटरनेट कनेक्ट होगा ऑटोमेटिकली आपकी विंडोज एक्टिवेट हो जाएगी। यस सर. ठीक है, सो आई एम नॉट मेंशनिंग एनी की। नाउ अनेबल द अकाउंट एंड स्पेसिफाई लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। अगर मान लो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो यस हम सर. लोकल एडमिन से लॉग इन कर पाए, उसके लिए बोल रहा है कि क्या आप अनेबल करना चाहते हो ये ऑप्शन, सो इट शुड बी देयर। ठीक है, यस सो इन दैट केस आई एम डिफाइनिंग द पासवर्ड कि भाई लोकल अकाउंट का ये पासवर्ड से मैं कनेक्ट कर पाऊं इन फ्यूचर, अगर मान लो कोई दिक्कत आ जाती है ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। ठीक है, सर. देन नेक्स्ट।
Do you want to join the system onto domain? Obviously, we want. Okay. After the format, we want to join the system onto domain. The domain. Yes, sir. So where domain, select your domain. It might possible that Lab.com. you are going to have multiple domains. For now, we have lab only, so I'm selecting Lab.com. lab. Yes, sir. It might possible that in lab you are going to have multiple OUs, right? Let's say Yes, sir. you want to place it in the dedicated OU that you can select, but for now we don't want to We do don't it, have any OE. Okay. right? We don't have it. Then set the account who will be having the permission to join the system onto domain. So that is Ravi, right? Ravi can join the system onto domain. Mm. Check names. Okay. And then give the password and then okay. Right? Then next. Configuration manager. Obviously, we want to install the client also, right? Until unless the client configuration manager client would not be there, we will not be able to manage the device, right? So we want to deploy configuration manager also. So select it. Okay. Yes, sir. Then next, state migration. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेट माइग्रेशन क्या करता है? मान लो रवि, आप और मैं दोनों, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, राइट? आपकी जगह मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है? Yes, तो sir. आपने कुछ क्रिटिकल फाइल्स पे काम किया है, तो मैं उस क्रिटिकल फाइल को डिलीट नहीं करना चाहता. अच्छा सर. मैं उसको रखना चाहता हूँ, उन फाइल्स को, आपके लैपटॉप की फाइल्स को रखना चाहता हूँ. तो मैं Yes, क्या sir. करूंगा, आपके लैपटॉप की स्टेट को मैं कैप्चर कर लूंगा. यूएसएमटी, यूजर स्टेट माइग्रेशन टूल. Okay. या फिर आपको मान लो, अम, अभी आप लिनोवो के लैपटॉप पे काम कर रहे हो, ठीक है? बट आपका लैपटॉप जो है वो रिटायर हो गया, Yes, sir. राइट? अब आपको नया लैपटॉप देना पड़ेगा कंपनी को. Yes, sir. बट आप चाहते हो कि आपका सारा डेटा आपको नए लैपटॉप पे भी मिल जाए. तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी? यूएसएमटी आपके लैपटॉप की स्टेटस को कैप्चर करके रख लेगी. Ja. और फिर जब वो नया लैपटॉप इंस्टॉल करेंगे, उस टाइम वो यूएसएमटी में आपके स्टेटस को चेक कर देंगे, और ऑटोमेटिकली उस नए लैपटॉप में आपके पुराने लैपटॉप की सारी फाइल्स आ जाएंगी. Okay, sir. दैट इज Oh, यूएसएमटी. ठीक है. yes, sir. So we don't have it as of now. Let me just uncheck it. And I don't want to capture the network settings. I don't want to capture the Windows settings. Let us uncheck everything. Then next, do you have any updates? Patching basically during the installation of the operating system, right? If you want to deploy some updates, you can select them. But Yes. we don't have as of now because we have not touched the patching topic. Let's Yes, sir. skip it. So do not install. Then next. Yes. You want to install the application during the deployment, Yeah. install applications. So you can select button all application you have deployed Yeah. so far. From Yes, that sir. you can select. Yes, sir. For example, We Firefox can and buy. 7-Zip, two applications I want to deploy. You can Yes, sir. select all of them, but unnecessary, I don't want But to put load on the yes, sir. machine. So I'm just going with two only. Okay, then Yes, sir. next, and then next, and then close it. So you have your task sequence, Windows 11, re-image and format. All right. Yes, sir. If you want to see the task sequence step, you can right click on it and you can select view. This is the Yeah. settings. Disable BitLocker, restart Windows PE, partition disk, UEFI, pre-provision BitLocker, apply operating system, apply Windows settings, apply network settings, apply device Mhm. drivers, Okay. set up Windows configuration management, enable BitLocker and install the applications. Okay, sir. ठीक है. Yes, बट sir. मैं सजेस्ट करता हूँ यार, बिट लॉकर ना रहने देते हैं. Why do BitLocker. that?
और रहने दे, चलो देखते हैं क्या करता है, माइट भी हो जाना चाहिए वैसे तो। बिट लॉकर के लिए टीपीएम होना जरूरी है, राइट? तो वो, TPM बस। बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ अगर हम कर पाए इसको तो, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो आप कुछ भूल गए हो ऐड करना, ठीक है, लेट्स यस से सर। यू फॉरगेट to install Office 365. Just hypothetically, I'm saying, okay? So हम्म। what you can do, you can add the you can add some other process later on also. So just हम्म। select add का option क्यों नहीं आ रहा? Let me cancel it. Add visible क्यों नहीं है यार? Why add is not visible? Hmm, let me cancel it. Let's wait for some minutes. Okay, we opened in the view mode. You have to go to edit. Now you can add it, right? You can see add is possible now. यस सर। So if let's say you want to install some more application, you can see only three, two. You want to deploy anyone, so you forgot any, then you can go to either you can add here only, right? Or if you want to add any other step, you can do that also. Add general, you can see run command line, PowerShell, restart computer and all, right? You can do that. यस सर। ठीक है, disk, BitLocker, user state migration, images, everything you can do later on also. ठीक है। यस सर। Restart in Windows PE. I think this is fine. List okay, and then right click on it and deploy collection Windows 11 only. Oh, sorry, Windows 10 only, and then okay. Then next. It should be required, right? Or available mode is fine also. Then next. Only media and PXC. You have to select this option. Okay. यस सर। Only media and PXC. Then next, next, next. अच्छा एक चीज और यार, ये ना हमें एक चीज और करना चाहिए। टास्क सीक्वेंस में हमने एक चीज में मिस कर दिया है, कि जब हमारा सिस्टम कंप्लीट हो जाए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, राइट, तो ये क्या यस सर। करे, ये रीस्टार्ट कर दे मशीन को। ठीक है। यस सर। सो ऐड, क्योंकि रीस्टार्ट के बाद मैं चाहता हूँ कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कर दे, लोड कर दे ऑपरेटिंग सिस्टम को, नहीं तो ये स्टेप दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा सर। ठीक है। सो आई विल यस गो सर। विद ऐड एंड देन जनरल एंड देन रीस्टार्ट कंप्यूटर, और रीस्टार्ट कंप्यूटर को मैं सबसे एंड में ले आता हूँ आफ्टर अच्छा। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन। ठीक अच्छा, है। सीक्वेंस के अनुसार काम करता है कि? यस। ठीक है। और मैं इसको जाके सेलेक्ट करता हूँ द करंटली इंस्टॉल्ड डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर ये रहेगा ना तो हाँ सर। बूट इमेज असाइन द, फिर से ये असाइंड हो जाएगा टास्क सीक्वेंस, फिर हम्म। से दोबारा फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। राइट। सो वी शुड गो विद द करंटली इंस्टॉल्ड डिफॉल्ट ऑपरेटिंग इसको। system and then apply and okay. This thing we have to do. That's it. Now right click and try to deploy it. And then next, available mode is fine. Pixie. Next, scheduling is, we want it as soon as possible. Next, show task sequence progress. If you want to see the task sequence progress, you can select this option. Okay. Then next,
Next, download content locally when needed by the running task sequence. Yes, let it be. Then next, this is the summary. Yes, sir. Any doubt, any question? Not so far. Same. All right. Then next. Okay, let me just verify once more. इसके लिए पीएक्सी की वैसे जरूरत नहीं है, ओनली कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइंट मीडिया एंड पीएक्सी, क्योंकि पीएक्सी हमें उसके लिए चाहिए होता है जब हम बेयर मेटल के लिए करते हैं, तो ये भी चलेगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट। तो सर यहाँ पे ये प्रोसेस वहां पे होता है जहाँ पे ऑन प्रेमाइसेस का इंफ्रा है ना सर, और यस, या फिर आप हाँ, मतलब लैपटॉप को ऑन प्रेम में होना जरूरी है, आपके नेटवर्क में होना जरूरी है, देन ओनली यू कैन यू फॉर्मेट कैन इट डू। और यू कैन स्टार्ट द और इंस्टॉलेशन। ऑटो पायलट जो होता है वो कम्प्लीटली वो इंटून का सिर्फ पार्ट है। इंटरनेट चाहिए, Okay. सिर्फ इंटरनेट सिर्फ कनेक्टेड है इंटरनेट अगर चाहिए। डिवाइस पे, तो आप उसको अच्छा। फॉर्मेट कर सकते हो। हाँ हाँ। ठीक है ना? So that is why it is needed after this, that we should learn Intune also, right? Okay, then minimize. तो अभी हम लोग बूट कर पाएंगे सर? Huh? अभी हम लोग क्लाइंट को बूट करना है ना सर? Yes, obviously. Let's do it and then we will wrap up. Okay. To get the policy here, control panel, configuration manager, actions. Now under operating system, you will be able to see that file. Okay. यस सर। Operating system. Yeah, here it is. Windows 11 हाँ format ये and सर। reimage, right? Now सर right click on it or double click on it and then select install and then confirm you want to upgrade the operating system on this computer जबरदस्त। and install. It will start installing and you can monitor it. तो ये हो गया सर आपका अपग्रेड का प्रोसेस, बट यहाँ पे जब हम लोग रीइमेज करते हैं तो वो बेयर मेटल के थ्रू होता है क्यों? नहीं, री इमेज भी है, ये री इमेज अच्छा। भी है। अगर मान अच्छा। लो कल इसमें विंडोज 11 डल जाए, राइट, और हम्म। फिर दोबारा मुझे इसको फॉर्मेट करना है, तो वो री इमेज ही तो हुआ। सर जैसे कि अभी कंप्यूटर क्रैश हो गया सर, हाँ, तो उस टाइम तो तो हम लोग यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आएगा ना सर टास्क सीक्वेंस का, जैसे क्यों नहीं कंप्यूटर। आएगा? अब हम वो डीएचसीपी भी तो इंस्टॉल हाँ करेंगे, फिर डीएससीपी वो, के थ्रू वो हाँ, करना फिर वो पड़ेगा। पिक्सी बूट के थ्रू हो डी- जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो है ना? तो वही ये चीज। लैब एक बार रेडी कर लो, मैं आपको नेक्स्ट वीक बता दूंगा ये वाला प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है सर। ठीक है। जो आपका डीएससीपी के थ्रू जो करेंगे ना सर? एग्जैक्टली, exactly. ठीक है। आप अपना VMware रेडी रखना नेक्स्ट सैटरडे को, तो मैं आपको बेयर मेटल इंस्टॉलेशन बता दूंगा और देन वी विल स्टार्ट विद द पैचिंग टॉपिक। हम्म। और मोस्टली नेक्स्ट वीक तक तो नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सारी चीजें। एकदम। अच्छा ऐसे हम हो जाएगा सर तो। हाँ, अच्छा, सर ये है ना रिपोर्टिंग वगैरह भी है ना सर इसमें? एसएससीएम। रिपोर्टिंग भी है, बिल्कुल है। अब मुझे कुछ नहीं दिखेगा, हम्म। क्योंकि ये एज्योर पे है ना, तो मैं कुछ नहीं कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। अब अच्छा। इसको चलने दो थोड़ी देर तक, 1-2 घंटे तक, नो नीड टू डू एनीथिंग, वी विल सी। और उसके बाद दोबारा लॉग इन करना, आपको विंडोज 11 इंस्टॉल्ड मिलेगी इस डिवाइस में। अच्छा सर। ठीक है। यस सर। अब देखो पेंडिंग क्या क्या रहता है हमारा। बैकअप सेकेंडरी साइट कैसे बनेगी? हम्म। सेकेंड इज राइट। ठीक यस है। सर।
एंड देन सॉफ्टवेयर अपडेट्स, पैचिंग। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट ये पूरा पैचिंग का पार्ट है ना सर? पैचिंग का पार्ट है। ठीक है, Okay. फिर आपके आ गया सॉफ्टवेयर अपडेट, डिप्लॉयमेंट, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट रूल। ओके, ये भी सॉफ्टवेयर पैचेस से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आ गया रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग लास्ट ठीक है, में फिर सर। उसके बाद आ गया रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट ही चल रही है ये भी। उसके बाद में आप डिफेंडर मैनेज कर सकते हो, राइट। आप एंड पॉइंट प्रोटेक्शन पॉइंट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में सर्वर अपग्रेड। कल मान लो कोई नया वर्जन आ गया एससीसीएम का, जैसे अभी आया भी हुआ है, तो उस वर्जन को कैसे अपग्रेड करना है, दैट टॉपिक। एंड देन यस सर। we'll talk about disaster and recovery, DR, how we can यस सर। restore the SCCM site. And then the last would be a very small session on Intune, so that you can decide whether you want to learn Intune or not. ठीक है। And then that's it. So this is my complete SCCM, which I used to teach in my previous batches or in my upcoming batches. Got it? यस सर। तो लैब आप जो नेक्स्ट बनाए खाली आपका एसएससीएम कंसोल बना के तीन दो क्लाइंट बना के रखना है ना सर? ने- हाँ, क्लाइंट चाहे एक ही बना लो, दूसरा क्लाइंट तो हमें बेयर, हम नया क्लाइंट बनाएंगे और ठीक है फिर सर। हम उसको नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग इंस्टॉल सिस्टम। कर। ओके ओके। ठीक है, तो जो एक क्लाइंट बनाएंगे उसमें ओएस इंस्टॉल ही नहीं होगा खाली? इंस्टॉल मत करके रखना बस उसमें, ठीक है, बस वही है पूछ रहा था मैं। आईएसओ इमेज मत हाँ अपलोड ऐसा करना। नहीं डालूंगा ना सर, ठीक है दैट्स इट, सर। बस यस। ये, बस एक वर्चुअल मशीन बना के रख लेना, दैट्स इट। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। ठीक है सर, चल। चलो देन आई विल सी यू नेक्स्ट वीक, रवि, ठीक एंड है सर। कीप दिस मशीन इन द रनिंग स्टेट एटलीस्ट फॉर 1 hour, हम्म। सो दैट वो विंडोज 11 अपग्रेड हो जाए, एंड देन वी विल, यू कैन चेक दैट हाउ इट इज गोइंग। ओके, ठीक है सर, थैंक मैं यू सर। इसलिए कर रहा हूँ जल्दी क्योंकि हमारे यस सर। पास वो जो है $200 वो खत्म हो जाएंगे, राइट। एक महीने का टाइम मिलता है ना, तो दो हाँ वीक सर। तो हमारे वैसे ही चले गए, यस सर, यस सर। राइट। और 2 वीक अब आने वाले, दैट मीन्स वो खत्म ही हो जाएगा, ये लैब हमारी डिलीट हो खत्म। जाएगी। तो अच्छा इसीलिए मैं 2 ढाई घंटे में ज्यादा कवर करना चाह रहा हूँ, दैट अच्छा। इज